like to welcome you all to Pak Pioneer Community Organization's 6th Annual Family Fangama Night. My name is Manam Naveed, and I have been volunteering with Pak Pioneers for the past 8 years. I would like to take this moment to thank you all for your ongoing support and for joining us this evening. Despite the cold weather, to come and enjoy this event with your friends and families, to introduce the co-founder and executive director of Pak Pioneers Community Organization, Mrs. Tahmina Naveed. She truly is the backbone of the organization and works tirelessly along with the team to make events such as Fangama possible. She has been actively involved in community work and the social service sector for more than 20 years. She has immense experience working with international organizations such as UNICEF and participating in exchange programs to countries such as Japan and China. She also happens to be a great mother. She will be hosting the rest of the evening, so please join me in welcoming Mrs. Tahmina Naveed. Thank you very much, Manam Naveed. So we share the same last names, and she happens to be my daughter. And today I am the proud mother. Thank you very much, Manam, once again, and welcome everybody. I would start with good evening, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Vanakkam, and Adab. आज हमारा प्रोग्राम अंग्रेजी और उर्दू दोनों में हम कोशिश करेंगे क्योंकि I know a lot of people here. Majority of the people, they do understand Urdu, and some of our distinguished guests, they understand only English. So we'll try to speak Urdu, which is already has a lot of English words, so people don't have a lot of trouble in understanding Urdu. So today, as she said, I'm the executive director of Pak Pioneers Community Organization, and I'm very proud to see all our friends here gathered with their families, all our senior friends, our young friends, with their families here at the 6th Annual Family Fangama Night. This event has been organized for the past 6 years by Pak Pioneers Community Organization with the idea of bringing the generations together. So bringing the generations like the grandparents and the grandkids and the kids, they all come together in one place where they can enjoy good food, good music, and a lot of social networking. So a lot of friends, they find lost friends, and some new friends are made here on this day. So up till now, for the past 6 years, we've been pretty successful in bringing the generations together through Fangama Night. Thank you. So today, I will start the program with the address, the welcome address by the President, Dr. Masoom Shah of Pak Pioneers Community Organization. Dr. Masoom Shah is also the co-founder of our organization, and he has always been there providing guidance to us, making us work. And if I'm the backbone, he is the head of the organization, and he makes us do our job properly in time. And we really appreciate that. Though he has some limitations when it comes to health, he's always ready and willing to help us and guide us and be with us as our team leader. So Dr. Masoom Shah. Respected honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, and good evening. On behalf of Pak Pioneers Community Organization of Canada, I welcome you all to this cold freezing weather, to our Family Fangama Night, organized by Pak Pioneers Community Organization of Canada. In the future, we will try to organize this annual event in the beginning of spring, inshallah. Now I need to welcome and recognize our today's special honorable guests, and they are Councillor Chris Fonseca,
Councillor Samira Ali, she is there. Yeah. Deputy Consul General of Pakistan Junaid Wazir, he has just left because he had to pick up somebody at the airport. Honorable MP Gagan Sikhan, Honorable MP Ikra Khalid, and MP Peter Fonseca, and MP Sven Spengeman, Mr. Rudy, Chair. On behalf of Pak Pioneers Community Organization of Canada, I really appreciate all their efforts and congratulate both of them for a successful event like this. Please put your hand together for both of them. The history of Pak Pioneers Community Organization of Canada and activities. Pak Pioneers Community Organization of Canada offers services to the seniors, women and youth among South Asian community. Pak Pioneers Community Organization of Canada was established and registered in 2011 with the Government of Ontario as a not-for-profit organization. In the year 2016, we got charity status, and any donation to this organization can be claimed in your taxes as donation through the receipt that we issue. To help seniors come out of isolation and loneliness feeling, we were able to establish a senior club in 2013 at Burnham Thorpe Community Center. With the help and assistance from Ward 3 Councillor, Mississauga, Chris Fonseca. We will always be thankful to her for her support in this matter. Please give her a big hand. Ladies and gentlemen, our senior club meets every Tuesday from 12:30 to 3:30 p.m. at Burnham Thorpe Community Center. The membership for the club is free of cost, and we are very flexible and accept anyone 50 years and more in our club. At about in the club, first half hour is for socialization, networking, and making friends. At about 1 o'clock, we start with a 10-minute soft, gentle yoga performed while sitting on the chair. Then we offer an information session on seniors' health-related issues, financial issues, legal matters, and so on. We inform them what kind of services are offered for the seniors from the government as well as from non-government organizations. These information sessions are offered by specialists, doctors, and professionals in their relevant fields. On a self-help basis, members of the club contribute $15 per month for the arrangement of refreshments on each Tuesday, and a lunch is arranged every last Tuesday of the month. We also offer free of charge basic computer learning courses as well as learning how to use tablets and newer cell phones so that seniors can keep up to date with the new technology. For this, we have developed a training manual that helps seniors in their learning process. We have also developed a WhatsApp group for keeping communication with our members in addition to email and telephonic messaging. In the club, we also offer seniors opportunities to express themselves and show their hidden talents. We have discovered a few talented singers, poets, and musical instrument players. In addition to indoor club activities, we organize field trips, picnics, educational workshops, and seminars, and mega events like this annual Family Fangama Night and poetic recital program called Mushaira. Their hidden talents. We have discovered a few talented singers, poets, and musical instrument players. In addition to indoor club activities, we organize field trips, picnics, educational workshops, and seminars, and mega events like this annual Family Fangama Night and poetic recital program called Mushaira. Seminars and mega events like this annual Family Fangama Night and poetic recital program called Mushaira. Educational workshops and seminars and mega events like this annual Family Fangama Night and poetic recital program called Mushaira.
Park Pioneers Community Organization's next goal is to establish a retirement facility for South Asian seniors, which will offer affordable long-term or short-term care. In this retirement facility, seniors will be able to communicate in their own language with service providers. They will enjoy their ethnic food along with facilities for their cultural and religious needs. This goal can only be achieved with your generous charitable donations. Ladies and gentlemen, an event of this magnitude can be arranged without the help from our sponsors. I appreciate and thank the following sponsors for participating in our event. Adnan Alvi of Tech Source, ETN Travels, Ali Khan from Grand Continental Buffet, Iqtidar Naqvi, Kamaluddin, Kamran Qureshi of CIBC, M. Alam of Alam Law Firm, Pisano Pizza and Wings, Salim Chaudhary of Dixie Electronics, Shakir Ahmedullah of Flato Developments Inc. and Zafar Law Firm. Finally, on behalf of Park Pioneers Community Organization of Canada, I thank media for coming and projecting this event. And they are Arifa Muzaffar from E-Awaz and Mr. and Mrs. Ali Shah of Z9 Printing and Z9 Digital TV, Javed Iqbal of Page One News, Awais Iqbal and Arshad Bhatti of Toronto 360 TV. Last but not the least, I want to thank Mr. Taqi Khan, in charge of musicians and singers, for his participation. Ladies and gentlemen, I'm sure today you will be enjoying delicious dinner and excellent music in this program. Thank you for coming and thank you for listening to me. Have a wonderful evening. Mrs. Nasima Siddiqui, she'll be saying a few words about our organization. Please. It is a very big pleasure to get a chance for me to share the experience of this club. When I first joined the club, I feel very, very nervous because this is the first time experience for my life, but through the warm welcome of the members of the club, I am so comfortable very quickly. The club is very beneficial because we got a chance to meet new people, gain new friends, go on trips all together. A very positive thing here that we are not friends only inside of the club, but rather outside as well, and try to help to each other in any matter of their life. This is a positive experience of seniors. We are able to meet more than once a week, spend couple of hours together with quality of time, share experience which make us happier and feel like a truly part of senior community. But all of this happened, the effort of Tamina, Naveed, Dr. Masoom, Ghayas, Safir and several or other members of the board, that every event we had very successful and made us happy to all. Thanks for listening. I'd like to welcome Mr. Zainul Abidin. He comes all the way, because he doesn't drive, so he comes all the way to attend our club weekly through Uber from Milton. So he hires an Uber and comes and attends the club with his friends. And today all his family, his daughters, his daughter-in-law, his wife, and his friends are here joining us today. So he would like to say something. All I want to say, I stopped working or stopped my business 30 years ago. And I have taken my wife to most part of the world, and I've been traveling to many parts of the world. And I find today's economic and social and other
currents and counter-currents, Canada is the best place to come and live here. Undoubtedly, this country provides so many things, but we all feel sometime an appetite for our homeland and our culture, and that is where organization like this one comes in. And I think we are thankful to Park Pioneer to provide this opportunity and such a lovely program, which are quite frequent. And I think this is where we need all of you to please contribute to the good and to the perfection of this program. Thank you very much. It has been a tradition of Park Pioneers to recognize and appreciate our friends who have been doing voluntary service in the community. And these MPs, MPPs, these dignitaries, these public representatives who join us here in our program, they come to encourage organizations like ours and others, and all these people who come here, and they encourage us by joining us. And today I would like to ask them all to please come and join us on the stage so we can present the awards of recognition for the community services to some of the volunteers in our community. So first of all, I would like to welcome Mr. Peter Fonseca, MP, Mississauga East Cooksville. Please join us, Pengaman from Lakeshore, Mississauga, Lakeshore. MP Gagan Sikand from Mississauga, Streetsville. MP Ikra Khalid from Mississauga, Erin Mills. I should have called our president the first. So Dr. Masoom Shah, please come on the stage. And then MPP Rudy, please join us on the stage. MPP Khalid Rashid. And now I see that Mr. Deepak has also arrived. So Deepak, can you also, MPP Deepak, please come on the stage. And then Councillor Chris Fonseca from Mississauga and Councillor Samira from Milton. So she has come here from Milton. I feel that it's really a matter of honor for a volunteer to be awarded all together by all the representatives of the city and at the federal level and at the provincial level. So these representatives are here to encourage more and more people to come forward, volunteer in the community, and be proud of their community, be proud of their services, as we are proud of them. So I will start off with a person who has been the manager, the caretaker, and almost everything, the accountant, he takes care of Mrs. Dixie Bloor Islamic Center. It's a one-room prayer room for which caters the Muslim community, and he's been doing this for the past 15 years. He's taken care of that masjid or that mosque throughout those years without getting anything in return for his services. So today we would like to acknowledge and recognize his services for the community. His name is Mr. Muhammad Aqil. Please join us. Let's start off with Samira Ali, councillor from Milton. Thank you so much, Davina, for this opportunity. Just wanted to thank everybody for the generous donation here, invitation, sorry. And the reason I'm here is because I support this organization so much for all the good that they do. And I live a little bit of a selfish reason too, is because right over there is my mom. She's sitting there. And I brought her with me because
thank you. So that people like my mother who are there, there's a big community of seniors from the South Asian community. Right. We're hoping for something like this. I came just right out of an election, and this was something that came out of the door, so if you can do that. Thank you. Thank you so much. Councillor Chris Fonseca from Mississauga. Thank you, Tamina. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. What an absolute pleasure it is to be here with you tonight, celebrating the 6th annual Fungama. I want to say congratulations to PAC pioneers, to you, Dr. Shah, to you, Tamina, Naveed, and to the PAC Pioneers Board. Congratulations to all the volunteers who received an honor or recognition this evening. As the councillor for Ward 3, where you have your weekly meetings and also in office now, Yeah, right. I have had the honor and the pleasure to see you grow as an organization in bringing generations together. And what I have seen is that in the environment that you have created, in your weekly meetings and in events like this evening, it is so comfortable. It is a true reflection of Thank the you. importance of community, of collaboration, of compassion, of confidence building, and of bringing out the best in everyone when they come together. And I want to thank you because I actually was first elected in 2010. And that is around the time when you came to me with your vision of PAC Pioneers. And I want to thank you for helping me grow in my community service as Thank a you. counselor. You've shown me that without community service, Yeah, right. we would not have the same strong quality of life that we have in our Yes. city of Mississauga. I see on my table, JD, my good friend, Mr. Bal, Mr. Dule, and thank you so much. They not only live in my riding, they actually had an organization and various parts of the in my riding, and I'm because of that. So thank you so much. That's good. Having up the three teacher and events like this takes a lot of effort. Yes. And having what you do to us, and each one of us, that you take our stresses away. When you take our stress away, the healthcare Yes. cost is less to the province. So you can always build this event to the healthcare cost. And these two guys, you see like right next, their writing is close by, you can send the invoice to them. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you very much. So MPP Khalid Rashid. Yes. Thank you very much, thank you for having us here, Sister Selena and Brother Naveed and Dr. Saab. Really appreciate. Thank you for all what you are doing in our community of Mississauga. You guys are playing a very important role, and you are helping our seniors, to have fun. And I'm a witness of those fun afternoons. So thank you very much, and thank you for arranging this event. Yeah, right. And because our government believes in efficiencies, I'm going to take a pause and I'm going to give the mic to my colleague, Lee, over here. Okay, right. Thanks. Thank you very much. I'm very pleased to be here on the 6th annual Fungama event tonight. I'm very honored to be here, as well as what you do for seniors, children, and families to get them back together. It's very important. I wish the entire South Asian community a happy and healthy, fun Fungama this evening, and congratulations, and let's keep doing this every year. Thank you. Yes, sure. Thank you. Thank you, MPP Rudy. Yes, MP Khalid. Thank you. Assalamu alaikum, Sat Shri Akal. Good evening, everybody. It is, as always, a pleasure to join PAC Pioneers in this wonderful event that you have every year. I know my Baba sitting right there at what I call the garden table. I also remember when we held a seniors town hall in my community office with Minister Philomena Tassi. Amina and Naveed were there really advocating for the fantastic work that needs to happen within our communities, that needs to happen in order for clubs like PAC Pioneers to really thrive. And I'm really happy to say that my colleagues and I are really excited to support you, and will always continue to ensure that seniors have the quality of life that is deserved in their retirement. Thank you, everybody. Thank you. MP Gagan Sikand. I personally really enjoy being in events
events like this because it celebrates some of the things that we're most passionate about. Being in the government level, I'm very passionate about the cultural diversity that we have in Canada. And this today is a perfect example of the mosaic that we call Canada. Also, I'm very passionate about seniors. Why are you so passionate about seniors? But sanu pata jadoo asli the aane sade maa baap kam karte hain te sade buzurg sanu baal hain. And I like what you had on the poster here saying bringing generations together. Because jadoo sade buzurg sanu baal hain sade bol sikhande hain sade heritage sanu sikhande hain. And I think that's a very important piece to recognize. Absolutely. So thank you actually for bringing seniors together, reminding us of our past, and once again all the work you do in the community. Thank you. Thank you so much. Thank you. MP Sven Spengeman, sorry. From Lakeshore. It is wonderful to be back with you this afternoon, this evening, and it's especially wonderful to be here with colleagues from every level of government. And the reason we're all here is because it matters what you do. Thank you to the executive, thank you to the volunteers, thank you to all the members for looking after our seniors, for looking after each other, for making our community stronger. Seniors are Canada's fastest growing demographic. We have a lot of work to do, we have a lot of thinking to do, and a lot of my colleagues from the federal government, we have your back when it comes to making the investments we need to make in our seniors. That's through our national housing strategy, that's through our in-home care programs, our mental health care programs, and our tax structure, which makes life easier for our seniors. We're walking by your side, we're recognizing the importance of your work, and all of us here are thrilled to be with you. Thank you so much for having me tonight. Thank you. MP Peter Fonseca. Thank you, Tamina. You know, I am so proud of this organization because I've seen it grow over the last 6 years and the vision that they've had and how they brought everybody together. Well, good evening, everybody. Assalamu alaikum, brothers and sisters, ladies and gentlemen, boys and girls, because we do have all multi-generational here today. And it's this event, Fungama, that Dr. Shaw and Tamina and Naveed and your board, and this event is a culmination of your entire year and all the years of all the success that you've had. And it's an opportunity to celebrate that success, and you do it in such a special way, by bringing family and friends together. And that's what it's all about. This is the legacy that you leave to our community. Because when we come together this way, these are the memories that we take and that we're able to share with friends in the community. So I can't thank you enough for what you do for us. And you know, to be here with all levels of government, with all our colleagues, all different political stripes, just shows how important the work that you do is to our work, to be able to continue to build the Canada that we have. And we hear over and over, this is the best place to live in the world. And it's the best place to live in the world because of a lot of hard work from all of you and all the volunteers and organizations and Pac Pioneers. So congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, everybody. Yes, they have everybody has certificates. Thank you so much for bringing this. And as I said, they are public. I didn't call them government representatives. I call them public representatives because they are here. The public voted. They wanted them to represent the public to the government, right? So you are working two ways, representing the government and the public. So a round of applause for everybody here, please. And a big round of applause for the seniors. Come on. So for the certificates, as everybody's been taking, I am the better half, though I call him to be my better half, because I won't be Tahmina Naveed without Naveed. So I would like to request Muhammad Naveed Chaudhry. This program was possible only because of him. I am not going to take any credit for that. So, yeah. Only one thing. Okay.
Thank you. Thank you. Park Pioneers is the platform. You can see that all the parties, the political and the non-political, the conservatives and the liberals, everybody is standing in one line. So, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज. Thank you. Thank you. और आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने हमारा एनुअल जो इवेंट होता है उसका रीज़न एक ये भी होता है कि थ्रू आउट द ईयर we try to raise enough fund to take care of our office and our activities for the rest of the year. So it's an activity through which we try to raise fund. Request Mr. Awais Iqbal to please come and अपना जादू चलाएं. और अवैस इकबाल साहब जैसे कि सब जानते हैं कि मीडिया में इज़ वेरी वेल नोन, कम्युनिटी में भी बहुत अरसे से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं. And it's not a formal fundraising appeal. So it's basically very कोशिश होगी. I'll speak in Urdu. Majority of the people are Urdu. Peter, I will be switching between Urdu and English. You'll get the gist of it. So सबसे पहले तो माशाल्लाह यहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं. मेरे अब्बू खुद भी इस क्लब के मेंबर भी हैं. मैंने सोचा कि फंक्शंस में हम जाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ये क्या ही अच्छा होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ से हम ऐसा सीख के भी उठें कि जिसको अपनी लाइफ में हम अप्लाई भी कर सकें. तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा. अगर जो लोग बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर मुझे 5 मिनट दे देंगे तो जो है वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा. मैंने 2-3 एस्पेक्ट से बात करनी है, ख़ास तौर पर उस हवाले से पैराडाइम शिफ्ट के हवाले से, बुनियादी तब्दीली की 4 हवाले से मैं बात करना चाहूँगा और बड़ी मुख्तसर क्विक बात होगी. सबसे पहला जो मेरा एस्पेक्ट है वो है मोटिवेशन, हौसला होना, मोटिवेट होना. किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेट होना. कोई आदमी पहाड़ या केटू को सर तब करता है जब उसके अंदर जज्बा होता है. अब चाहे वो जज्बा आपका अपना पैदा करदा हो जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, या वो जज्बा किसी की वजह से आपके अंदर पैदा हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. चाहे आप सीनियर हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, कुछ भी हैं, मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप इस चीज़ पे गौर करें कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने जंग क्यों हारी, अमेरिका के पास ज़्यादा हैवी वेपन्स थे, अफ़गानिस्तान के पास तो क्या था, छोटे मोटे वेपन्स थे. लेकिन अफ़गानिस्तान ने वो जंग क्यों जीती? सिर्फ़ और सिर्फ, हम इस हवाले से बात नहीं कर रहे कौन सही कौन गलत, लेकिन बात हो रही है कि फुट सोल्जर्स की जब तक मोटिवेशन ना हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते. अगर मेरा वज़न ज़्यादा है, जो मैं मानता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे दिमाग में ये बात घुस गई कि मैंने अपना वेट कम करना है तो फिर कोई ताकत रोकने वाली नहीं है. तो मोटिवेशन इज़ नंबर 1 एस्पेक्ट ऑफ योर सक्सेस. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को मोटिवेट करें तो अगला मरहला आपका ये कि आपने अपनी ज़िंदगी का पर्पस तलाश करना है. आपका पर्पस क्या है ज़िंदगी में? चाहे आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहते हैं अपने मज़हब के लेंस से, चाहे आप कहीं काम करते हैं, कोई बिज़नेस आपका है, चाहे आपका कोई और ऐसा मामला है, उसमें आपने पर्पस तलाश करना है. क्या आपकी इंटेंशंस कैसी हैं? जो काम आप करते हैं क्या उसको आप इखलास से करते हैं? क्या सब्र और शुक्र अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं? अगर उस चीज़ का तयन आप नहीं कर पाते तो आपका क्या होगा, हर काम का अंजाम जो है वो गलत बरामद होगा. अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए पर्पस का जानना, इंटेंशंस का पॉजिटिव होना मस्ट है. उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट. जो हमारा सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ये महसूस करते हैं कि आई डिज़र्व दिस या वी डिज़र्व दिस. अब चाहे वो बेटे का बाप से रिश्ता हो, मियाँ का बीवी से रिश्ता हो, या मेरा काम पे वर्क पे रिश्ता हो, जब तक इस चीज़ को हमने अपने अंदर दाखिल नहीं किया कि वी नीड टू अर्न इट एवरी सिंगल डे अगेन एंड अगेन, जब तक ये चीज़ हमारे, अब एक बच्चा है वो एक्सबॉक्स चाहता है, वो ये समझता है कि मैं चूँकि मेरा बाप है, मेरे माँ बाप हैं, मुझे एक्सबॉक्स दिला देंगे. शायद एक मरतबा एक आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे, बार बार तो नहीं करेंगे. तो उस बच्चे को भी अर्न करना पड़ेगा.
पेरेंट्स को भी बच्चों की रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी, मियाँ को बीवी की रिस्पेक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि यार आई डिज़र्व दिस, इससे हमें बाहर निकलना होगा और हमें इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलना होगा कि आई नीड टू अर्न इट, नॉट ओनली वंस, आपको बार बार इसको अर्न करना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर की बात है, लेगेसी। पीटर स्पोक अबाउट लेगेसी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर किसी से पूछा जाता है कि डू यू हैव योर 2 years 5 years प्लान, अगर मैं पूछूँ इस रूम में कोई हाथ उठाएगा, आपका कोई 5 साल प्लान है, 2 साल का प्लान है? वेरी गुड, आलम भाई ने हाथ उठाया। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी पिछले दिनों, किसी ने कहा yes you need to have 2 years plan, you need to have 5 years plan, but why don't you look at beyond, why don't you have a 200 years plan? अब आप और मैं सोचेंगे 200 साल का प्लान, what a joke, it's not a joke। 200 साल के प्लान से मुराद क्या है कि think beyond yourself, what Peter just mentioned, legacy, what are you going to leave behind when you leave? And this is where I will connect this story. If you think about Pak Pioneers, which has become a brand, and this is something which Naveed Chaudhary Sahab, Taimina Sahiba, Masoom Shah Sahab, their entire board, this is what something they are going to leave behind. आज ये छठा इवेंट है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो 6 सालों से आ रहे हैं? प्लीज़ हाथ उठाइएगा। 6 सालों से आने वालों की तादाद जो है वो मेरा ख्याल है 20-30% है। सलीम चौधरी साहब भी बैठे। अब जो लोग 6-7 सालों से आ रहे हैं, आप ये बताइए कि ताहाम और जो नवीद चौधरी साहब की बेटी और ताहाम जो दो हैं, इनको आपने 6 साल पहले कैसे देखा था? ये बच्चे जवान हो रहे हैं, इनके साथ साथ हमारे बच्चे भी जवान हो रहे हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग बियॉन्ड। आप 200 साल का सोचें, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक किताब बनाएंगे और पूरा प्लान बनाएंगे। द आइडिया बिहाइंड इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर लेगेसी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर यू, थ्रू योर चिल्ड्रन एंड बियॉन्ड देम। और यही वजह है कि पाक पायनियर जब इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा, एक चीज़ के पैशन से एक चीज़ की इन्होंने ठानी, वही बात याद रखिएगा, मोटिवेशन, उसके बाद पर्पस, कि मकसद क्या था इनका। आया इनका मकसद इससे पैसे बनाना था, आया इनका मकसद इससे फेम हासिल करना था, या इनका मकसद जो है वो खल्क़े खुदा की खिदमत करना था, एक वैक्यूम को पुर करना था। जब उनके पास मोटिवेशन थी, उनके पास पर्पस की अंडरस्टैंडिंग थी, उसके साथ साथ उनके पास सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उस एस्पेक्ट से था कि दे नीड टू अर्न इट। अगर इन्होंने अर्न न किया होता तो आज ये लोग छठे साल यहाँ बैठे ना होते। तो दे हैव टू बी कीप अर्निंग इट अगेन एंड अगेन, जिस पे ये काम कर रहे हैं। और एंड में ये लेगेसी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जाएंगे। देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा कि पाक पायनियर्स का कोई ऑफिशियल सालाना फंड रेजर आधा घंटा 1 घंटा कोई पैसे की अपील पे स्पेंड नहीं होता, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। आप मेरे जैसे जो लोग हैं छोटी छोटी अमाउंट डोनेट करते हैं, जिसके तहत ये इदारा जो है वो रन होता है और सीनियर्स को सहूलियात फराम करता है। और आगे भी इनकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन वो सारी ख्वाहिशात जो है जाहिर है वो डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हवाले से। आपके टेबल्स पे फॉर्म्स रखे हुए हैं, कोई कैद नहीं है कि आप $10 दीजिए, $25 दीजिए, जितना आपका दिल चाहता है आप उस फॉर्म पे फिल कीजिए। और ख़ास बात यह है कि पाक पायनियर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चैरिटेबल स्टेटस रखती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से, तो टैक्स डिडक्टेबल रसीदें भी आपको दी जाएंगी। तो अल्लाह की निगाह में भी और खुदा की निगाह में भी वो अमल बेहतर है जो चाहे थोड़ा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। अगर आप $10 देना चाहते हैं तो हर महीने दीजिए, थोड़ा दें, कंसिस्टेंट दें। $25 देना चाहते हैं हर महीने दीजिए, और फिर आप देखें कि आपको इसकी बहारें किस तरह से मिलेंगी। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया। ये थैंक यू वेरी मच अवैस इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि आप लोग जो उन्होंने बात की है, मकसद भी हमारा ये है कि जो जनरेशन से हम लोग आए हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, आज हम उर्दू बोल भी रहे हैं, उर्दू समझ भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे बाद जो थर्ड जनरेशन हो, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड उर्दू और स्पीक उर्दू एट ऑल और रीड इट। तो अपनी ज़बान को भी, अपनी लेगेसी को भी, अपने कल्चर को प्लीज़ कीप इट अलाइव। आप लोग हमारे लिए
अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू हमें गाइड करते हैं जितने हमारे सीनियर्स हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे भी सीखें, लेकिन हम उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे अपने बड़ों की तो ही वो सीखेंगे। और उर्दू के हवाले से स्पेशली नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं कम्युनिटी में, लेकिन आई वुड से कि ये उर्दू की तरवीज के लिए उसकी बहुत खिदमत करें उर्दू ज़बान की बाय रनिंग अ फ्री स्कूल। एक फ्री स्कूल उर्दू लैंग्वेज का ही इज़ रनिंग एवरी सैटरडे। ये कूपर्स मॉस्क के पास होता है और ही टेक्स आउट टाइम, और बहुत सारे बच्चे इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कम एंड लर्न द लैंग्वेज उर्दू फ्रॉम हिम। माई ओन किड्स, मेरे अपने बच्चों ने उनसे लिखना पढ़ना सीखा उर्दू, और इसी वजह से अब भी वो अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बिकॉज द लैंग्वेज कीप्स यू कनेक्टेड विद योर कल्चर। सो नाउ वी वुड लाइक टू हैव दोज लकी ड्रॉज, जो डोर प्राइजेस का भी हमने अनाउंसमेंट किया था। कीप योर टिकट्स, जो आपके टिकट्स के हाफ पोर्शंस आपके पास हैं वो प्लीज़ रेडी रखिएगा। वी आर गोइंग टू हैव ड्रॉ हियर। कोई छोटा सा बच्चा होगा यहाँ पे जो आके इसमें से कर ले? आप आओ बेटा, ग्रीन और वाइट में, या आ जाओ, कम हरी आप। We have a smart watch from Tech Source. Tech Source के अलवी साहब यहाँ पे होंगे, Tech Source वाले यहाँ पे हैं मौजूद हॉल में, नहीं आए तो उनकी तरफ से स्मार्ट वॉच का गिफ्ट है। लेट्स सी 144 044 like 44 044 for the smart watch 044। ओह वाह, ये हमारा प्लान नहीं था बिल्कुल। ये लकी ड्रॉ, दिस वाज नॉट फिक्स्ड। जैसे क्रिकेट मैच फिक्स होता है, दिस वाज नॉट फिक्स्ड। वाओ, फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ। वाओ, आइए आ गया ये। और ये मासूम भाई, इसको मैं मासूम भाई प्लीज़ आप आइए, डॉक्टर मासूम शाह प्लीज़। Thank you very much. Yeah. So next. Okay. So as usual, सलीम चौधरी साहब जो डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो हमेशा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे हर उसके अंदर इवेंट में भी, हमारे हर तरह के उसमें काम में। और उसके लिए अब जो है वो नेक्स्ट जो प्राइज़ निकल रहा है वो है डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स की जानब से एक फ़ोन है जी, नंबर जी 078 जी। और आई वुड रिक्वेस्ट सलीम चौधरी साहब टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और आके प्रेजेंट करें। आए ओके 078 कोई भी नहीं है। 078 no, so 078 once, 078 twice, thrice. Let's do the next number. Okay, so it's 020 20 020. Oh, good. जल्दी थैंक यू। आइए प्लीज इधर आइए, आप उन्हीं को दिखाइए। थैंक यू। अच्छा जी, next prize, this was the showstopper kind of a prize. एक माइक्रोवेव
माइक्रोवेव oven है डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से. So we'll do a draw for that. One more. जी एक और ये. So 001. 1. Who's got ticket number 1? Ticket number 1. Oh, wow. Our first time guest from Winnipeg. Welcome, sir, a senior guest. See, this is how Mississauga welcomes newcomers. So, a microwave oven. So, yeah, right, sure. Thank you so much. इससे पता चलता है it was totally fair. कोई fixing नहीं थी. Thank you very much, sir. Thank you. From Dixie Electronics. Thank you, Salim Saab. And we have with us एक हमारी sponsor हैं, Dr. Nazia Rahman from Dentistry of Mississauga. Would you please come on the stage to present an award, a gift of free cleaning, dental free cleaning? Yeah, Mr. Kashif. Mr. Kashif from Dentistry of Mississauga. Yeah, right. Thank you. And you can draw the So 142, 142 for dental cleaning, free dental cleaning. 142. Huh? 142. Oh, 142 once, twice, thrice. Next. आ रहा है कोई? 142. Zero 58, 58. Oh, good, Baba. Dental cleaning, $5,000 नहीं है, free dental cleaning है. Oh, thank you. नहीं जी, दांत साफ करवाने हैं उन्होंने. जी बेटा. Thank you so much, Mr. Kashif from Dentistry, Mississauga Dentistry. Thank you. And thank you. That's it. That's it, Manam. That's it. Yeah. Thank you very much, beta. What's your name? Myra? Okay. Myra, for you we have one coupon of a large pizza from Pizzano Pizza. Thank you. Yeah. Masum bhai. Aap dena. So this is from Pizzano Pizza. We have like one large pizza for Myra. For Myra. Thank you, Myra. Yep. Thanks. That's it? Yeah, thank you so much. And we'll have one more draw after we have had a bit of a रूह की ग़ज़ा के बाद. खाना उसके बाद है. So we'll have like another appetizer for your soul by having very nice music for today's night. So now I would request Mr. Taqi Khan, who has organized, who has helped us with organizing all these singers and putting together the musical night for today. So, Mr. Taqi Khan. बहुत शुक्रिया भाभी. बहुत अरसे से मैं इस जो तंजीम है सीनियर्स के लिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत ज़माने पहले एक छोटे से बेसमेंट में जहाँ पे ग़ालिबन नवी साहब रहते हैं, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा आई विल बी देयर डेफिनेटली. और यकीन करें उसके बाद से आज तक मेरा इनका साथ ख़त्म नहीं हुआ. शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन साथ ख़त्म नहीं होगा.
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। बहुत ज़ोरदार तालियाँ अपने लिए बजाइए ज़रा ज़ोरदार कि आप लोग इस सर्दी में, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, सर्दी आदमी को बहुत कपकपाती है बहुत। वो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सर्दी से डर नहीं लगता, कपकपी से डर लगता है, तो इसलिए ये सर्दी जो है कपकपी लाती है लोगों को। तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर हैं GTA के, अभी बस उनका प्रोग्राम राइट अवे शुरू करते हैं। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जाना नहीं है जब तक हम आपसे कहें कि भाई वो दरवाज़ा वो रहा सामने, यहीं रहना है। आप बहुत इन्जॉय करेंगे, यकीन कीजिए। हर किस्म के गाने, नए पुराने, हर किस्म के जो आप कहेंगे, आपकी पसंद सर आंखों पर, हम उसको पूरा करेंगे, बेफिक्र रहिए। तो बस हमारे साथ रहिए। म्यूजिशियंस आर ऑलमोस्ट रेडी। 2 मिनट दीजिए, जब तक आपस में जो कुछ कहना है कह लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। This is not easy to organize this kind of event, but this is not the only event that I know that entire year that you guys have been engaging our seniors. Such a noble cause that and work that you have been doing for our seniors. Thank you for that. And Naveed bhai, thank you very much for inviting me. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। सजाई है नबील भाई ने और ऑर्गेनाइजर्स ने। ऑल्सो वेलकम टू ऑल द गेस्ट। मुझे फैसल रज़ा कहते हैं एंड आई एम रियली हम्बल्ड टू बी हियर परफॉर्मिंग फॉर यू गाइस। Just like any other evening, we start with the one who has given us this opportunity to enjoy this evening, wonderful food and all the beautiful folks. So I'm going to start this evening with a beautiful naat. And with me, I have Mujahid, one of the best keyboardists and Kevin. किस्मत में मेरी चैन से जीना
Thank you. तू की जाने प्यार मेरा मैं तेरा तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी जान मेरी जान मैं तेरू समझा बाकी ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेरू
खुशबू वालों लब दिया मेरी असाहा तेरे बिना है कि मैं करा दूर उदासी दिल बेकरार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा थैंक यू वेरी मच तकी भाई बहुत शुक्रिया फैसल। ख़वातीन हज़रात, मुझे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आगे कौन बैठा है, लेकिन यकीनन अच्छे लोग बैठे हैं। और मेरे ख़्याल से डिनर ग़ालिबन आवाज़ें जो आ रही हैं शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम अपनी सिंगर को बुलाएं ताकि आपको पता चले कि आपको रेस्ट ऑफ द इवनिंग भी यहाँ बैठना है, खाने के बाद भी। खाने के बाद ये नहीं कि वो दरवाज़ा नज़र आया चलो भाई हम चलते हैं, चलो चलो रोटी हो गई चलो चलिए हूँ, ऐसा नहीं कीजिएगा प्लीज़। ज़ोरदार तालियां श्यामला के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए थोड़ा पुराना गाना और कुछ नए गाने उनके साथ हम शुरू करते हैं। Can we have a huge round of applause for Faisal? He did a phenomenal job. Thank you. किसी के इंतजार
Thank you so much. ख़ुद हज़रात, मुझे पता है कि आप लोग खाना खा रहे हैं। जो लोग नहीं खा रहे हैं वो तालियां ज़रूर बजाएं, और जो खा चुके हैं उसके बाद बजा लीजिएगा, भले गाना ख़त्म हो जाए ना हो, प्लीज़। बहुत ही प्यारा सा गाना बाजीराव मस्तानी का। आई होप यू ऑल एंजॉय। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते थे ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। जख्म में सा तूने लगाया, दीवानी 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 हो गई। मरहम में सा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई। पहचान मेरी इश्क की अब तो, पहचान मेरी इश्क की अब तो कहानी 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 हो गई। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई। कहते थे ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते थे ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। Thank you so much. I would like to invite Faisal back on stage so that we can do some duets for you all. Check, check, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3. You three? Check.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Check 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Check. Thank you. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3, 1, 2, 3. Check 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. थोड़ा सा जरा माइक की प्रॉब्लम था, लेकिन आई थिंक इट शुड बी गुड. Check 1. Check 1, 2, 3. टकी जी थोड़ा ऊंचा करो मेरा. Check. सुबह का चैन मेरा शाम का सुकून है प्यार तेरा प्यार नहीं मेरा जुनून है. दर्द तुझे हो अगर आँख मेरी रोती है जुदा हो के मर जाएंगे हमें मालूम है हमें मालूम है हमें मालूम है. तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. तेरी मोहब्बत के कातिल है कदा रहना दिल में करीब होके. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं सावन भी तुझ बिन कितना बरसे हैं. जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरी आ जाने
की